Hello everyone, welcome to Prelim News Point को जदि आमे देखो ways of Prelim News Point. So that means जदि आमे देखिबा आजिर पेपर जदि देखिबा Sunday 8th of October. तो first headline रे जदि आमे देखिबा India has crossed that is 100 medals in the Asian game, which was in China. That is what Guangzhou. That to be in Guangzhou. That means preliminary either they will ask you okay, where exactly the Asian game held, that was Guangzhou, China. How much gold India has bagged? 38 goals in total, 107 goals, 38 silvers, 28 goals and 41 bronze. So altogether we are having more than hundreds of what that is the medal. So this is what that is Prime Minister himself, he has greeted the team and to rejoice the region, that is saying that 100 of reasons to rejoice. And this is the first time. This is also the symbol that saying that we are in China, you have conquered the China. It's like a theme like that, like the political leaders, the different spheres of India, they will anchor it like this. That would be the one part of the prelim facts. The most important fact would be what? That is the Hamas attack on Israel. So this question UPSC once or twice asks from this region. First of all, what would be the prelim points from this point, from this news? It would be where exactly the Gaza. ये Gaza किसका part है? Gaza is a part of what? That is what? Part of Gaza and West Bank. They together Palestine. They together what? Palestine. They together Palestine. So West Bank and Gaza, they together form the Palestine. And here that means अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये पूरा इजराइल है. ओके, उसका कैपिटल तेल अवीव, लेकिन अभी उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया. कहाँ पे? जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, एंड दैट टू बी दैट व्हाट? ईस्ट जेरूसलम. So what exactly the problem here lies that the East Jerusalem, which is now declared as the capital by the Israel, which used to be Tel Aviv, but according to India the capital is Tel Aviv. So they might ask you where exactly the Tel Aviv and where is Jerusalem. Jerusalem also considered the third most, that is sacred place in the Islamic, that is what? Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem. Okay, that is the region, one of the region that why this region comes ahead. Apart from that, Hamas is a terrorist group according to the world, and according to Israel, they rules this region, that is the Gaza Strip. They have accessibility to the Mediterranean Sea. This Hamas is a terrorist group. They are ruling in what? Gaza Strip. And Fateh is ruling here West Bank. Here is what? That is the Fateh. Another group is there, Fateh. So these two groups are ruling these two regions. So UPSC once asked a question, match the following what groups with the region. Like that is like Kurdistan. These are the question UPSC has asked already. तो ये सारे क्वेश्चन आ चुका है. तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हो, जेरूसलम, यहाँ पे वेस्ट बैंक, तेल अवीव, ये मैपिंग बेस प्रीलिम पे आ सकता है. तो दैट इज वाई, दिस इज वाई यू कैन मेक ए नोट. यहाँ पे आप एक नोट छोटा सा बना सकते हो कि लोकेशन इनका क्या है, whether these countries are having the accessibility to the, here is what? Your Dead Sea, Jordan, West Bank, in between there would be Dead Sea. Also the Rift Valley extend to this region. So these are the points you could remember. You could also write down a note on for the prelims point of view. Okay, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो अनदर प्रीलिम पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो जीएसटी का जो काउंसिल अभी मीटिंग हुआ था, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या किया गया, जो रॉ अल्कोहल, मिलेट्स, प्योर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जो रॉ अल्कोहल ना रिफाइन नहीं होता है, जो शॉप पे मिलता है, मतलब जो जैसे कि शॉप पे एकदम लेबल वाला मिलता है ना, वहाँ पे जीएसटी आ जाएगा. और मोलासेस पे आप देखो, यहाँ पे मोलासेस जो था ना, यहाँ पे जीएसटी 5% हो गया, 28 से 5%. तो दैट मीन्स मोलासेस के ऊपर जो जीएसटी था वो कट हो गया, और जो एक्स्ट्रा दैट इज द नेचुरल अल्कोहल के ऊपर अभी नहीं लगेगा, लेकिन जो रिफाइन होगा उसके ऊपर आपका लग जाएगा, इट विल बी 18% लग जाएगा, 18% उसके ऊपर लग जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे जो माल्ट है ना, माल्ट जो बार्ले से बनता है, बार्ले से, वहाँ पे 5% का जीएसटी लग जाएगा. ओके, जीएसटी फिर 5%, मोलासेस जो है उसको 28 से लेके 5% हो गया. तो ये चेंजेस आपको देखने में मिलेगा कहाँ पे, दैट इज व्हाट? जीएसटी काउंसिल में जो अभी जो डिसीजन लिया है, दैट वुड बी प्रिजाइडेड बाय, ऑब्वियसली द जीएसटी काउंसिल वुड बी प्रिजाइडेड बाय हुम? Nirmala Sitharaman. Okay.
सो ये आपका अगर हम बोलेंगे तो दे माइट आस्क यू कि व्हाट इज द लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल, व्हाट एंड वेयर एग्जैक्टली इट हेल्ड। सो जीएसटी काउंसिल अगर आपको ये बोलेंगे ना कि जीएसटी काउंसिल, ओके, ये आपको पूछ सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल दैट इज व्हाट, दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो ये था 52nd जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था। ओबियसली इट वुड बी हेडेड बाय निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो ही इसको हेड करेंगे, whoever would be the finance minister, yes he will head the GST council. So that one you can get from the prelim point of view. You can also write down these points for the prelims. Okay, तो prelims से यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गाजा आपको पूछ सकते हैं। हमास मैंने बोल दिया, जॉर्डन, डेड सी, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, तेल अवीव, ये सब हमने यहाँ से देख लिया। तो आगे चलते हैं फिर आगे फिर जब जाएंगे तो ऐसे आपको नोट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप देख लो ना कैसे नोट कैसे बनाते हैं देख लो, ये एक पॉइंट हो गया। जैसे ऐसे मैप पे आ गया तो जैसे एक रीजन पर न्यूज़ पे रहता है ना, जैसे कि हमास आ गया, ये क्या है, टेररिस्ट ग्रुप है, कहाँ पे आता है, गाजा, गाजा कहाँ पे है, ऐसे आपको नोट बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री नोट बनाना होगा आपको। जब भी आप नोट बना रहे हो ना, keep in mind that you are making the 360 note of that particular region. Let's say this region remains in news. So any region that remains in news, what you have to do is that make a note on that 360 degree of that particular region. You have to make the note of all the surrounding regions parts in your note so that it would be a complete news or the note. Otherwise, let's say Gaza in news and you are only writing the note on the Gaza, that would not be a holistic note. Do one thing, that you make a note on Tel Aviv, you make West Bank, Jerusalem, here is the Dead Sea, here is what Dead Sea, Jordan, all these stops all together you have to make a note so that it would be a holistic note. Okay, now we will move on. So Durga Puja is also coming. सो दैट मीन्स उसके ऊपर तो हम बाद में ही चर्चा करेंगे जो भी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो जीएसटी काउंसिल 52nd जीएसटी काउंसिल हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे हमें चेंजेस देखने मिला है कि खास करके हम देखेंगे जैसे जो डीएमए फंड है ना, यहाँ पे जो जीएसटी लगता था उसको भी हमने उठा दिया। दैट मीन्स द डीएमए फंड, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसको हम जिसको दैट मीन्स ऑलवेज हेडेड बाय हुम, तो डीएमए फंड इसको कौन हेड करते हैं, कलेक्टर करते हैं, दैट इज द डीएम, दैट इज द डीएम itself who head the fund, that is district mineral fund, collector itself the chairperson of that fund, this fund is utilized। तो यहाँ पे जैसे देख लो आप यहाँ पे डीएमएफ सिर्फ न्यूज पे है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ चुका है। इसको आपको कैसे नोट बनाना है, आपको ऐसे नोट बनाना है कि डीएमएफ क्या है, कब आया था, किस लिए आया है, इसमें जो पैसा आता है वो कहाँ पे खर्च होता है, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होगा, एक फाउंडेशन ट्रस्ट हो गया, ये ट्रस्ट है, यहाँ पे जो भी मिनरल दैट मीन्स ये खासकर वहीं पे होता है सेटअप, ये हर डिस्ट्रिक्ट पे नहीं होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट पे होता है। The DMA fund always established in those districts where the minerals or the mines are there, where the mines is been mined. Okay, a certain amount of that what money is collected, and that is what towards the mineral foundation trust of that particular district. That money would be spent for the what, well-being of the people of that particular area, well-being of the people of that particular area, like the education, electricity, water, road, communication, all these stops that would be spent for that. Okay, so clarification, that means so DMA fund बहुत सारे स्टेट ने बोला था कि मतलब जैसे कि उड़ीसा से भी हमारे कुछ लोगों ने ऐसे बोला था कि जो DMA फंड है ना उसको जीएसटी से बाहर हम रख लेंगे। सो इसको हम डीएमएफ फंड को मत इसको क्या क्या ऐसे चलते कि बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स डीएमए फंड इज नाउ केप्ट और इज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी विच यूज्ड टू बी 5%, इज नाउ नो जीएसटी वुड बी अप्लाइड ऑन दैट। ओके, so that would be the changes you could find from there. This person for the OPSC, those who are preparing for the civil services, this person, remember this person, that is the Kishore Jana, who has thrown for the silver, that is but javelin, the javelin star of Odisha and also the star of India, who got the silver medal in the Asian game next to Mr. what, that is I would say Neeraj Chopra. So Neeraj, it's a what, Neeraj with the golden boy of India. So दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया इस बार, तो इनका नाम भी आप रख सकते हो। जो ओमफेड का स्कैम हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सीबीआई का कोई जरूरत है नहीं। सो दैट इज ऑल्सो न्यूज फ्रॉम द फैक्ट। Then we will move to the other fact as well. So other fact is that for the prelim point of view is that
Like Simlipal Biosphere Reserve is going to open from the 14th of October. So what you have to write here is that how this point could be turned to the prelim points. इसको इस न्यूज़ को हम prelim पे कैसे कन्वर्ट करेंगे. Simlipal Biosphere Reserve, whether it's a UNESCO heritage site or not, कब ये हुआ था, नेशनल पार्क है कि नहीं, किस लिए जाना जाता है, जैसे कि मेनालिस्टिक टाइगर, and this was also featured in the London's journal as well. One of the most desirable tourist destination once it was published. There were national parks also there. There is also national parks and known for the what? That is the tiger. This is also UNESCO heritage site, one of the vice and the only vice preserve of Odisha. तो वैसे आपको लिखना है यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, कौन सा रिवर है. यहाँ पे जब भी नोट बनाते हो ना, मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो मेकिंग द होलिस्टिक नोट. जैसे कि सिमलीपाल कहाँ पे है, वेयर इट इज लोकेटेड, इन वट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स. So whether it is biosphere, it's a biosphere. For what it is known, it's a tiger. For it is known for the tiger. What kind of river? River like Budhavalanga River that passes through this particular region. Any sanctuaries over there? You can also write the sanctuary's name. Any tribes over there like the Monkey Deer tribes, Santhal tribes, these tribes, those who are residing, that you could also name the tribe, so that it would be a holistic preparation. Otherwise, this time it is in news, you just remember the Simlipal is situated in Mayurbhanj, that would not work for you. You have to make a holistic note and that will work for you. So this would be like that. Okay, so next, yes, we will comes to next. NTCA. Now this one would be also for the prelim points. NTCA, what? National Tiger Authority. So this was also UPSC asked. This is come under the Wildlife Protection Act 1972. So this one is coming. This organization or this authority, the body, was created under the Wildlife Protection Act 9. That is what 1972. It was under that. So that is why NTA. That means what the official data says that what. That means that death of tiger in Tamil Nadu is the cause of concern. Okay, so that is also the alarming situation where the official data says that 76 tigers in what Tamil Nadu in 2026. That means what 26 itself now is rose to 306, but now there is also what some death of the tigers is noticed. So that is why like the what Muddumalai. So here is the what Muddumalai. So Muddumalai, Nilgiri Biosphere Reserve. These are the names like you have to remember which are the national parks with the biosphere reserves coming in what Tamil Nadu and Nilgiri Forest as well. Plus what is the like iska kya hai, matlab IUCN rank kya hai, what exactly the IUCN rank of the tiger, what is this is endangered, critically endangered, like this you have to make the note. Okay, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, NTCA के काम क्या है, NTCA कौन सा एक्ट के अंदर आता है, टाइगर का स्टेटस क्या है, कितने सारे इंडिया पे मतलब लाइक व्हाट टाइगर रिजर्व है, ऐसे हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा टाइगर के ऊपर. एकदम आपको एक नोट बनाना पड़ेगा जो कि ठीक है यहाँ पे इशूज है डेथ ऑफ टाइगर के लेकिन हमारा पॉइंट जो होगा ना वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो इनके काम क्या है, ऐसे आपको नोट बनाना पड़ेगा. तो ऐसे जब बनाओगे नोट थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन it would be a what holistic note, and here but there would be very less chance that you are skipping the questions, or the questions would be within that from areas. And here what one thing I will say, that is but Pallava, and that is a Pancharatha, and this Pancharatha once UPSC asks this one as well, the rock cut architecture, that is the what जिसको we will call it what, that is the what we call it, that is the Pallavas or the Mamallapuram's Ratha styles. That one also in the art and culture, this point you can also add, that is the Bhima Ratha, Draupadi Ratha, okay, Nakula Sahatave Ratha. These are the Rathas, like the 5 Rathas जिसको हम बोलते हैं Pancharatha, 5 Pandavas, or this is also called as the 5 Pandavas. This one also very important, so you can also remember and you can also write for the prelim point of view. इसको हम अभी पॉइंट लिख सकते हो प्रीलिम के लिए, ठीक है. बाकी अगर हम देखेंगे तो बाकी उतना प्रीलिम पॉइंट के है नहीं, तो प्रीलिम पॉइंट का जो आज का पार्ट था ना उसको हमने डिस्कस कर लिया. बाकी जो इजराइल वाला इशू इसको देख लें कि मतलब इसको तो बस ये फैक्ट्स ही दिया गया, मैंने आपको बोल दिया कि बाकी यहाँ पे अफगानिस्तान को देख सकते हो कि बहुत वायलेंस हो रहा है, कि द ह्यूमन राइट्स इज वायलेटिंग, बिकॉज जितने सारे रिफ्यूजीज आ रहे थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान भगा रहे हैं उनको, सो दैट इज पाकिस्तान ऑल्सो ड्राइविंग आउट दोज
migrants and the immigrants, those who are coming from, I would say what, Afghanistan border, they are forcefully drive out by the Pakistan, and that leads to what, humanitarian crisis. Particularly the women and the childs are the most sufferers. The UN wants the Pakistan, that would be the what serious situation. So that you can also note down here. So this would be what prelim point. That would what प्रीलिम पॉइंट डिस्कशन. सो हाउ टू मेक द नोट. ऐसे आपको नोट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला कि कैसे नोट बनाना पड़ता है. जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आता है उसको कैसे सर्च करना है, कैसे बनाना है, वो आपको बहुत काम देगा. ऐसे अगर आप 6 महीने 7 महीने कर लिया ना, तो आपको मतलब मोस्ट ऑफ द 90% सिलेबस विल बी कवर थ्रू दिस, थ्रू लाइक मेकिंग note like this, a 360-degree note that will help to complete the syllabus, which is whatever is in the syllabus is there. Let's say today we are having some news from the political, from the violence, from the earthquake. Next other day we will have from the environment. Next other day we will have from the history, art and culture, so on and so forth. So the way I said today how to make the note from the news is been in what the news, the remains in the news. From there, if you are extracting that one, that would be pretty helpful for you. So with this, I will end the session. Thank you everyone. Meet you again.